different platforms like Unacademy, CodeChef, Newton School. Also, earlier to that, I was also a problem setter at HackerEd, and currently I'm running my YouTube channel. I think most of you already know about that. The channel name is Code Library, Yeah. and where we provide the contents related to data structures, algorithms, and lots of placement related steps. So yeah, that is a pretty much thing about myself. Okay, that's great. It's quite impressive, and you are doing a very great job, Yogesh, I must say, by providing the contents and the way you are helping students. So yeah. Okay, so without making a delay, let's start with the today's topic. That's how to learn, how to master this logic building. So Yogesh, all stage is yours. Please proceed. Sure, sure, sure. Kunal, can you let me know if Yeah, the screen it's is visible visible. with Yeah, everyone? it's visible. Okay, sure. So, hi everyone. So, in today's session, mostly we are going to discuss like how I learned the logic building and how you can improve problem solving skills. So, mostly आज की discussion में यही होने वाला है. And what are the steps you all should follow? What are the mistakes you already do which you should not do during learning your building your logic building, improving your problem solving skills? But those are the points we are going to discuss in today's session. So yeah, session के पूरे end तक बने रहना because you're going to learn a lot of things from this session. So yeah, I think we have some audience and we can start with this. Yeah, sure. So mostly I think I have already covered about myself and we can skip this. And let's start. So agenda of the day is that firstly, I have divided this complete session in four parts where I will discussing what a daily schedule of a programmer Uh, should look like if you are a programmer, right? So you Yogesh, should have a specific, sorry to yeah, interrupt you, but your PPT is not visible. So it's your PPT. just a sec. Screen share तो हो रहा है ना? Yeah, it's screen share, but its PPT is not visible. Let me reshare my screen. Yeah, sure. Now, can you check? Yes, your screen is visible, but that PPT. Have you switched to PPT part? Yeah, PPT is shared right now. Okay, but it's not showing on the screen. Like, have you switched to this window frame or like entire screen? If you can switch to entire screen, then PPT will be as well, isn't it? Yeah, I have shared the entire screen, not just the. Okay. Yeah, I am sharing my complete screen. Yeah, complete screen share. Yeah, now it's perfect. It's visible. Is it visible? Yeah. Yeah, good to go. Sure, sure, sure. So, sorry guys, due to some technical issues. Yeah, so we can start with again about the session. That is, today we are going to learn what are the logic building technique you should know to learn the problem solving skills, how you can improve your problem solving skills, right? So, mostly the agenda for the day is that I've divided our complete today's session in four parts where we will be discussing a lot of things. So, let's start with the first thing that is, what is the daily schedule a प्रोग्रामर शुड हैव तो मान के चलो यार कि बहुत लोग होते हैं कि स्टार्ट करते हैं दिन में एक प्रॉब्लम बनाते हैं सोचते हैं कि यार बहुत क्वेश्चन बना लिए तो यू शुड नॉट लुक लाइक दैट फर्स्टली यू शुड हैव अ प्रॉपर शेड्यूल कि यार प्रोग्रामर का कैसा शेड्यूल होना चाहिए डे टू डे लाइफ में एंड यू शुड take that schedule and you should follow that regularly you should follow that consistently right so I guess now we can start. So first thing is मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि क्या schedule होना चाहिए programmer का. Second thing is what are the steps you should follow to improve your problem solving skills. कैसे तुम लोग logic building को improve कर सकते हो. And the next and the most important thing कि
कैसे किस कोडिंग प्लेटफॉर्म को तुम्हें चूज करना चाहिए, इफ यू आर अ बिगनर, इफ यू आर एन इंटरमीडिएट प्रोग्रामर, इफ एन एडवांस लेवल प्रोग्रामर, तो किस ऑर्डर में तुम्हें कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड एट द एंड आई विल बी डिस्कसिंग कि like you know that you are solving data structure algorithm for giving an interview. You just solve the problems, and in interview also like mostly DSA questions पूछे जाते हैं. तुम उससे यार like if you are able to give an optimal solution, you are hired, right? Like you will be able to clear that round. But most of you will be thinking like how we are applying the problem solving skills in day to day life if you are working as a software engineer at any XYZ company. तो मैं वो भी थोड़ा बहुत तुम्हें explain करने वाला. तो बने रहो पूरे एंड तक, एंड आई थिंक द सेशन विल बी रियली हेल्पफुल. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट थिंग इज अ डेली शेड्यूल ऑफ अ प्रोग्रामर, कि एक प्रोग्रामर का डेली का शेड्यूल कैसा होना चाहिए. So I have divided this complete schedule in 3 sections where we have a beginner level, we have intermediate level, and we have an advanced level. So in a beginner level, I have said that you should solve at least 3 problems per day, where you will be solving 1 easy problem and 2 medium level problem. Why I'm saying 1 easy and 2 medium level problem? अब तुम लोग देख रहे हो कि इंटरमीडिएट में मैंने 4 प्रॉब्लम लिखा है, एंड एडवांस लेवल में आई हैव रिटन 5 प्रॉब्लम्स. तो तुम लोग सोच रहे होगे यार कि मतलब इफ आई एम स्टार्टिंग एज अ बिगनर तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स बनाने चाहिए ना, राइट? तभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होगा, करेक्ट? But thing is that as you are starting anything, right, so you will face a lot of issue to solve that problem. So it's not only about DSA, it's about anything you are starting. अगर तुम उसमें एकदम fresher हो, whatever thing you are learning, if you are a completely newbie, if you are a very complete new to that thing, you will take lots of time to solve that. ठीक है? But अगर तुम एक experienced बंदे बन गए हो in that field, तो तुम्हें यार वो solve करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, साइकिलिंग तुम सीख रहे हो, राइट? सो इफ यू आर अ न्यू एंड यू वांट टू लर्न साइकिलिंग, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न द साइकिलिंग. बट इफ यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा साइकिल चलाने में, राइट? यू विल बी एबल टू क्रॉस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वेरी इजिली, राइट? सो that's why I have kept less problems as a beginner level, because it will take time for you to solve the problems. So minimum एक तो easy problem and 2 medium problems तुम्हें बनाने ही चाहिए, right? And you should be consistent with this number of problems. And it's not a hard coded that कि तुम्हें ये 3 problem ही बनाने हैं. You can, it's upon you. If you are able to solve more than this, it's okay. But इससे कम try मत करना, ठीक है? वरना फिर it will take time to improve your problem solving skills. First of thing is that. Next is if you are an intermediate level programmer. अब तुम लोग पूछ रहे हो यार कि मैं intermediate level programmer कब, like मुझे कब पता चलेगा कि now I am an intermediate level programmer. तो अगर तुमसे यार एटलीस्ट 2-3 प्रॉब्लम्स मीडियम लेवल के इजिली फटाफट बन जा रहे हैं, राइट? लाइक यू आर एबल टू सॉल्व इजी एंड मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स, तो समझ जाओ कि तुम somehow you are able to solve medium level problems, तो तुम intermediate level programmers बन गए हो. तो now start solving 4 problems per day. This is the minimum band I am discussing. That is 1 easy, 2 medium and 1 hard level problem. तो यार मतलब अब तुम लोग सोच रहे हो कि easy, medium, hard level कैसे डिसाइड करते हैं? तो टैग्स रहते हैं. Like if you will go to any platform like LeetCode हो गया, फिर Geek4Geeks हो गया, कहीं भी तुम लोग जाओगे और टैग्स रहते हैं. This is the easy level problem, this is the medium level problem, this is the hard level problem. तो तुम्हें वहां पर टैग्स दिख जाएंगे, तुम उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करके सॉल्व कर सकते हो. तो 4 प्रॉब्लम बनाओ मिनिमम. if you have time, you can solve more problem as well. And now if you think कि तुमसे यार कुछ hard level problems भी बनने लगे हैं, you are able to solve that. Now you are at an advanced level. मतलब तुम सोच सकते हो अपने आप को कि now तुम थोड़ा बहुत advanced level पे आ रहे हो, and start solving at least 5 problems per day. That is 3 medium and 2 hard level problem. This will help you to be consistent, और तुम लोग जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बनाओगे, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इंप्रूव होगा. अब अपन लोग डिस्कस करते हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं करना है ना, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो हम लोग डिस्कस करते हैं. सबको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, बट देयर आर लॉट ऑफ वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. बट नाउ वी हैव टू डिस्कस, नाउ वी हैव टू थिंक कि हमें सॉल्व करना कैसे, कैसा अप्रोच रखना है हमें. तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. So let's move on to the next part, that is how to improve problem solving skills or how to improve your logic building. तो मैंने इसे यार 3 स्लाइड्स में मैंने डिवाइड करके रखा है. There are lots of points. So yeah, let's start. So first thing is that practice, practice and practice. तो पहली बात, अगर तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होने वाला है. दैट्स प्रीटी मच श्योर. ये तो पहला पॉइंट है, और तुम्हें यार इससे, दिस इज अ हार्ड ट्रूथ, ठीक है? If you're not practicing anything,
you're not going to improve anyway. So first of all, you have to practice, practice and practice, and then only you will be able to improve your problem solving skills. अब तुम लोग सोचोगे यार कि practice तो यार सभी तो ही करते हैं, फिर what is the benefit of coming to this session? So it's not till practice. Let's discuss how you have to practice. Practice तो करना ही है, but करना कैसे? Let's discuss that. So yes, first of all, start solving the problems according to the schedule mentioned. जो मैंने तुम्हें schedule दिखाया पिछली slides में, तुम्हें यार उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है? फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ. मतलब ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्टली अब एडिटोरियल्स देख रहे हो, वीडियो से वीडियोस देखे जा रहे हो. आज तुम्हारा टारगेट था 5 प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बस तुमने 5 वीडियोस देख लिए, यूट्यूब वीडियोस, एडिटोरियल्स, अरे यार मैं तो सब समझ गया, सब कुछ हो गया एंड ऑल. दैट इज नॉट द थिंग. फर्स्ट यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ. मतलब डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं देखना होता है. यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. खुद बनाओ, खुद ट्राई करो. अगर तुमसे नहीं बन रहा है, ट्राई ब्रूट फोर्स सोल्यूशन. फर्स्ट ट्राई द ब्रूट फोर्स सोल्यूशन. अगर तुमसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बन जा रहा है, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. गो फॉर एन ऑप्टिमल सोल्यूशन. कभी कभी होता है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं बनता है एक बार में, राइट? तो अपन लोग पहले ब्रूट फोर्स सोल्यूशन सोचते हैं, हाँ ये इसको ऐसे कैसे किया जा सकता है, फिर हम लोग सोचते हैं हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दैट. करेक्ट? नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल. अब तुम लोग सोचोगे प्रॉब्लम में सॉल्व करना तो स्टार्ट किया, बट कितना टाइम मुझे देना है ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? So for example, you are tackling an easy level problem. So try to give at least 20 minutes to solve an easy level problem. अगर तुम यार 15-20 मिनट भी नहीं दे रहे हो, सिर्फ तुम 5 मिनट तुमने ट्राई करा अपने से, and if you think you are not able to solve, just you are going to editorials and all, that will not work. मतलब देखो, लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करने का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग को वर्क करवाना है, राइट? योर ब्रेन शुड वर्क मोर. After that only you will be able to improve your problem solving skills. Correct? तो ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन तुमने देखा, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया, तुम डायरेक्टली सोल्यूशन पे चले गए. नो, यू हैव टू फर्स्ट थिंक बाय योरसेल्फ. अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो, चेक करो कि आर यू एबल टू गेट सोल्यूशन और नॉट. 20 मिनट तो मिनिमम देना ही चाहिए तुम्हें इजी प्रॉब्लम के लिए. अगर तुम 20 मिनट भी नहीं दे रहे हो, तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू इम्प्रूव. So that's again, I am giving an approximation time. It can also happen then within a 10 minutes also you can get solution. Within 5 minutes also you can get the solution. It depends upon person to person. This is the time frame which I am giving कि अगर तुमसे 20 मिनट के अंदर भी problem solve नहीं हो रहा है, so there can be lots of reasons जो मैं discuss करने जा रहा हूँ next. तो पहले मैं medium and hard के बारे में बता दूँ, फिर I will go to the reasons. So after like now if you're solving a medium level problem, तो give at least 40 minutes. अपने दिमाग को खटाओ 40 मिनट्स तक एंड देखो कि तुमसे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल पा रहा है कि नहीं. हार्ड लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू गिव एटलीस्ट 60 मिनट्स एंड चेक इफ यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट. If after spending 20, 40 and 60 minutes for easy, medium and hard level problems, go for hints. अब तुम्हें देखना अगर तुम लीड कोड एंड ऑल में तुम जाओगे, तुम्हारा हिंट्स का सेक्शन भी रहता है, राइट? तो तुमसे अगर सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो, तो हिंट्स चेक करो. यू विल गेट लाइक हिंट 1, हिंट 2, हिंट 3 ऐसे करके ऑप्शंस रहते हैं. एक एक हिंट्स चेक करो, देन अगेन ट्राई और चेक करो कि तुमसे प्रॉब्लम बन रहा है कि नहीं. अगर फिर तुमसे प्रॉब्लम बन गया, आई थिंक इट्स गुड, यू वेर एबल टू कैच द हिंट्स, राइट? बट स्टिल अगर आफ्टर वॉचिंग द हिंट्स ऑल्सो यू वर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नाउ गो फॉर एडिटोरियल्स. ठीक है? इफ हिंट्स आर नॉट हेल्पिंग यू टू गेट द लॉजिक, तो उसके बाद तुम एडिटोरियल्स देखने के लिए जाओ, राइट? तो अब तुम लोगों को एडिटोरियल्स देखना है. नाउ there can be 2 options now. Like मुझे भी याद है, like initially when I used to give some contest, मैं कुछ problems बनाता था, तो मैं editorial भी देखता था, but मुझे यार समझ नहीं आता था solution, right? अगर किसी का मुझे समझ आ जाता था solution, तो there are 2 reasons I am able to understand. First thing is that मुझे वो concept आता होगा. For example, problem is related to stack. ठीक है? Stack का problem कोई है, and मैंने editorial देखा मैंने कि stack use करके उस problem को solve किया गया. Okay? एंड मुझे स्टैक पहले से आता था, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड द स्टैक प्रॉब्लम. करेक्ट? अगर मुझे अगर स्टैक नहीं आता, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मुझे वो प्रॉब्लम समझ, उसका सोल्यूशन मुझे समझ ही नहीं आता. दैट इज आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एडिटोरियल. मुझे एडिटोरियल समझ भी नहीं आता. सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एडिटोरियल, देन इट्स गुड. इट मींस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. बट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एडिटोरियल, तो इट्स क्लियर कट दैट you have to first again go with the concept. तुम्हें concept I think नहीं आता होगा. मतलब तुम अगर ट्री का प्रॉब्लम देख रहे हो, सोल्यूशन ऑब्वियस आता है. तुम्हें ट्री अगर तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें सोल्यूशन नहीं समझ आएगा, एडिटोरियल नहीं समझ आएगा. तो तुम्हें क्या करना है नेक्स्ट? यू हैव टू गो एंड लर्न दैट कॉन्सेप्ट. अगर तुम्हें ट्री नहीं आता है, सोल्यूशन नहीं समझ आया, तुम्हें ट्री का कॉन्सेप्ट सीखना होगा.
Go and learn that concept, and after that again solve this problem. Go through hints, go through editorials, and after that, मतलब process तुम समझ गए ना, whatever I told you, right? Now, don't waste time in a single problem for whole day. ऐसा नहीं करना है कि तुम एक ही प्रॉब्लम को लेकर बैठ गए हो दिन रात, बस उसी को लेकर बैठ गए, ऐसे नहीं चलेगा, राइट? एज आई मेंशन, इफ यू आर अ बिगिनर, तीन प्रॉब्लम्स तो बनाने ही है, एंड आई हैव आल्सो मेंशनड यू द टाइम फ्रेम एज वेल, कि कितने कितने टाइम देने हैं फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स, तो उसको मेंटेन करके चलो। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम तुमने लेकर बैठा तुम पूरे दिन लेकर बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना है, दैट विल नॉट हेल्प यू टू इम्प्रूव, ठीक है? Now the next thing is that as you started your DSA journey, right, you and उसमें क्या रहता है, लीड कोड, एंड उसमें तुम जाओगे तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं कि लाइक चेक इफ सर्किट इज अवेलेबल इन दिस लिंक लिस्ट और नॉट, like merge two shorted array, then do some problem, तो से straightforward problems रहते हैं, right? So if you are comfortable with straightforward problems now, right, now go for story based problems. अब तुमसे यार straightforward problems तो बन रहे हैं, तो now go for the story based problem. Why I'm saying is that क्योंकि यार इंटरव्यूज में भी तुमसे मोस्टली स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स ही पूछे जाते हैं, एंड यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इस स्टोरी जो है, from that story you have to decode a problem statement and check which data structure or algorithm is going to be used in that problem. ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, लिखा रहता है कि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, तुम्हें पता चल जाता है कि क्या डीएसएस में यूज होने वाला है, बट एक स्टोरी गिवन रहेगा तो तुम्हें पहले उसे डिकोड करके निकालना होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स, कौन सा एल्गोरिथम यूज होने वाला है. So for that, I think CodeChef, CodeForces are a very good platform where you can get the story-based problems, और तुम लोग वहां से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज दैट आफ्टर लाइक तुमसे यार स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम बनने लगा, तुम स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम में आ गए, CodeChef, CodeForces तुम लोग स्टार्ट कर दिए करना. अब मान के चलो कि यार तुमसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे हैं ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट, स्टार्ट अप सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स. ठीक है? स्टार्ट अप सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स व्हिच यू वर नॉट एबल टू सॉल्व ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट के समय जो तुमसे नहीं बना उसे तुम अब सॉल्व करना स्टार्ट करो. दैट विल हेल्प अ लॉट टू इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट. और फिर सेम पैटर्न फॉलो करना है, इजी मीडियम जो मैंने बताया, इजी मीडियम हार्ड, जिस लेवल के प्रॉब्लम होंगे उतना टाइम देना है, हिंट्स देखना है, एडिटोरियल्स देखना है, कॉन्सेप्ट नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट सीखना है. सेम पैटर्न यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर गिविंग कॉन्टेस्ट एज वेल. ठीक है? आई थिंक दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार इस प्रॉब्लम को मैंने एक हफ्ते पहले बनाया था. Now I got same concept again. I got the same concept problem again, but मुझसे अब नहीं बन रहा है. What can be the reason? So if you are solving any problem और तुमसे वो नहीं बना, for example, you gone through the editorials, you saw a new kind of concept is being used there. ठीक है? कोई नया तरीके का लॉजिक यूज हो रहा हो, नए तरीके के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हो, तो make sure to make notes of those logic which you think is difficult to implement. ठीक है? उसका नोट्स बना लो, and try to revise all those notes weekly, bi-weekly or monthly. It completely depend upon person to person. किसी बंदे को हो सकता है कि अगर वो मंथली भी रिवाइज करेगा तो चल जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट उसे याद रहेंगे. अब किसी किसी बंदे को क्या होता है कि वीकली रिवाइज करना पड़े. लाइक सबका ब्रेन तो सेम नहीं है ना, राइट? इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. तो ट्राई टू रिवाइज योर नोट्स, और नोट्स बनाओ जो तुम्हें लगे कि यार थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था इम्प्लीमेंट करने में, लाइक थोड़ा डिफिकल्ट था समझने में, इसका लॉजिक थोड़ा डिफरेंट था. सो दोस थिंग्स आई विल सजेस्ट. तो एक नोट्स बनाओ और उसे वीकली, बाई-वीकली, मंथली जैसे तुम्हें सही लगे उसे रिवाइज करो, राइट? These are not the strict rules which I am mentioning. These are just my opinion. But yeah, you are free to like change this concept as well. मतलब तुम लोग यार अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो. 4 प्रॉब्लम बनाने के बाद 4 बनाओ, 10 बनाने के बाद 10 बनाओ, बट these are the basic concepts, basic rules which I used to follow. तो तुम लोग भी फॉलो कर सकते हो, बट या स्टिल अपन इट स्टिल डिपेंड अपॉन यू कि तुम्हें कैसे करना है. एंड एज आई मेंशन, ट्राई टू इम्प्लीमेंट एज मच प्रॉब्लम एज पॉसिबल. सिर्फ सोल्यूशन देखने से नहीं चलेगा, तुम्हें इम्प्लीमेंट भी करना होगा. इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, लाइक तुम लॉजिक बिल्डिंग तुम्हारा इंप्रूव होगा जितना ज्यादा इंप्लीमेंट होगा. जैसे मुझे याद है व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, मैं मोस्टली यार क्वेश्चन देखता था, सोचता था हाँ ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, सोल्यूशन मैं देख लेता था वीडियो में, चलो हो गया, समझ गया मैं. एट नेक्स्ट डे मैं जब उसे इंप्लीमेंट करने जाता था मुझसे नहीं बनता था. व्हाई? लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स. इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे तो कैसे प्रॉब्लम बना पाओगे? तो implementation is very much important. Chalo, I guess next, let's discuss the next point. That is the most important which I wanted to share with everyone. That is coding platforms to follow in chronological order. तो किस तरीके से तुम्हें coding platforms को use करना चाहिए? वो this is completely like what I have experienced. So if you are a very beginner,
स्टार्ट विथ हैकर रैंक, ठीक है। अब उसमें तुम इजी मीडियम हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स बनाना स्टार्ट करो, सिंपली क्योंकि इसमें सबसे बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। तुमसे क्वेश्चंस बन रहा है, शिफ्ट टू कोड शेफ, ठीक है। कोड शेफ के प्रॉब्लम बनाओ। अभी मैं रिसेंटली लाइक आई वाज गोइंग कि यार कोड शेफ का प्लेटफॉर्म भी बहुत ही चेंज हो चुका है, लाइक मैं भी देख रहा था रिसेंटली। सो तो उसमें तुम्हें यार सारे डिफिकल्टी लेवल्स के प्रॉब्लम्स भी मिल जाते हैं। कोड शेफ के प्रॉब्लम्स बनाओ। अगर तुमसे प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, देन मूव टू अ नेक्स्ट लेवल, दैट इज अ कोड फोर्सेस। तो तुम कोड फोर्सेस में चले जाओ। कोड शेफ बन रहा है, कोड फोर्सेस में चले जाओ। नाउ लेट्स मूव बैक। मैं मतलब ये बाइनरी ट्री जैसा बना के रखा हूँ। लेट्स मूव बैक टू द पेरेंट नोड, कोड शेफ। कोड शेफ के प्रॉब्लम तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, सही से नहीं बन रहा है, मूव टू लीड कोड, सॉल्व लीड कोड प्रॉब्लम्स। नाउ दैट्स इट। बट लेट्स मूव ऑन टू द पेरेंट नोड अगेन। अब मैं जो हैकर रैंक कर रहा था, मुझसे प्रॉब्लम नहीं बन रहे थे, तो यू कैन शिफ्ट टू हैकर रैंक। हैकर रैंक ही करो, और पैरेलली either you can start solving geek for geeks problems as well। हैकर रैंक से भी नहीं बन रहा तो उसको ही कंटिन्यू करो, ट्राई करो इंप्रूव करने का, मोर प्रॉब्लम्स बनाने का। और गीक फॉर गीक्स के प्रॉब्लम्स भी तुम पैरेलली स्टार्ट कर सकते हो बनाना, उसमें भी इजी मीडियम एंड हार्डवेयर प्रॉब्लम्स होते हैं। सिमिलरली अगर ये प्रॉब्लम्स बनने लगे, देन मूव ऑन टू द लीड कोड, और लीड कोड के प्रॉब्लम्स बनाओ। तो ये दिस इज द बेसिक बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर which I think will help you to improve your problem solving skills and choose which platform to use to solve the problems. This is completely according to me, which I think, but yeah, still it's completely open to you. You can experiment from your side as well, whatever you want to use, ठीक है। but ये पूरे मेरे साइड से था, like what I think you can follow। चलो, I guess most of the things are covered, and the final thing I want to discuss is that like apply problem solving skills in day to day at companies। तो यार कंपनीज में तुम लोग सोचते होगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे यूज हो रहा होता है, कहाँ यूज हो रहा होता है, और किस तरीके से यूज हो रहा होता है। लेट्स डिस्कस दोस थिंग्स। So yeah, these are some points which I want to share। So first, if you are in a company, right, तो तुम्हें कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा। That is not a straightforward DSA problem, that will be a problem which is being faced by clients और customers, ठीक है। जिस भी प्रोडक्ट में तुम्हारी कंपनी काम कर रही होगी, राइट, उस प्रोडक्ट के कोई ना कोई क्लाइंट्स होंगे, राइट, कुछ ना कुछ कस्टमर्स होंगे, उनका कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहा होगा, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे। तो you will get that problem statement to you, and you have to understand यार वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या। नाउ you have to start solving that problem statement। अब तुम कैसे सॉल्व करोगे? go to the clients, go to the customers, understand their pain points, उनसे सीखो, उनसे जानो, try to learn from them कि क्या क्या issues उन्हें आ रहे हैं, what is an expectation from their side, what kind of solutions they want from us as a developer। तो हम लोग डेवलपर है ना, तो हमारे से उन्हें क्या solution चाहिए, क्या क्या उन्हें pain points हो रहे हैं, right, क्या क्या issues उन्हें आ रहे हैं। we will note those things and then we will start working on that, ठीक है। अब तुम्हें पता चलेगा क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या सॉल्व करना है, उसका तुम डिजाइन वगैरह बना लोगे। नाउ यू हैव टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग, करेक्ट। तो अब ऐसा नहीं है कि यार तुम्हें पूरा कोड बेस ही देखना है एंड टू एंड कि कैसे वर्क करता है। इट कैन हैपन कि तुम एक नए सर्विस में काम करने जा रहे हो, तो पूरा कोड बेस देखने का जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेंज, ठीक है, जितने पार्ट्स में तुम्हें काम करना है, गो थ्रू दैट कोड ओनली। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कोड बेस बहुत ही बड़ा रहता है, 1000 2000 लाखों लाइन, लाख लाइंस के कोड होते हैं, ठीक है, 1 लाख 2 लाख लाइंस के भी कोड होते हैं। तो तुम एक छोटा सा फिक्स करने जाओगे तो पूरा कोड तो नहीं रीड करोगे ना। जितना तुम्हें चेंजेस करना है उतना सेक्शंस का कोड रीड करो। व्हाई आई एम सेइंग इज दैट यू विल गेट मल्टीपल प्रॉब्लम्स टू सॉल्व इन दैट सर्विस। छोटे छोटे पार्ट्स का तुम सॉल्यूशंस बना रहे हो, कोड्स को तुम समझ रहे हो, अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल कोड बेस। जितना तुम्हें चेंजेस करना है उतना कोड बेस समझ लो, चेंजेस कर लो, फाइनली छोटे छोटे चेंजेस करते करते तुम्हें पूरा कोड बेस का नॉलेज हो जाएगा। स्टार्टिंग में यार पूरा कोड बेस रीड करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो व्हाट इट इंडिकेट्स, यू आर फॉलोइंग द करेंट अप्रोच। तुम्हें फटाफट सॉल्व करना है, तो तुम्हें जितना चेंजेस करना है तुम इतना ही कोड को रीड कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग थ्रू कंप्लीट कोड बेस। नाउ इफ यू थिंक इफ इट इज अ हाई प्रायोरिटी टास्क, चेक इफ यू कैन गिव अ शॉर्ट टर्म फिक्स टू अनब्लॉक योर क्लाइंट्स और नॉट। अगर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस है और तुम्हारे क्लाइंट्स को फटाफट अनब्लॉक करना है, तो देखो कि कोई शॉर्ट टर्म फिक्स तुम लोग यूज कर सकते हो कि नहीं, एंड देन वर्क ऑन अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। बट स्टिल इफ यू हैव टाइम, if your clients have time, you have a sufficient 3-4 days, मतलब it depend upon कि कितना टाइम लगेगा उसे सॉल्व करने का। अगर sufficient टाइम है, क्लाइंट्स के पास ज्यादा कुछ कस्टमर इंपैक्टिंग नहीं है, you can simply work on a long term phase and you can deliver that। Otherwise
If it is a very critical, if it is a very high priority task, you can work on any of the short term approaches to unblock your clients, और फिर तुम लॉन्ग टर्म अप्रोचेस में काम कर सकते हो. नाउ कोई भी तुम्हें बड़ा टास्क दिया जा रहा है, राइट, ट्राई टू ब्रेक योर टास्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स. स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड करो, वो स्टार्ट वर्किंग ऑन दो स्मॉलर सेगमेंट्स, एंड फाइनली तुम देखोगे तुम्हारा पूरा जो कंप्लीट बड़ा टास्क था, बिगर टास्क था, वो सॉल्व हो गया. तो ऐसा नहीं है कि तुम यार बड़ा स्टेटमेंट देख लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और तुम डर गए कि यार यार कैसे करूं, इतना बड़ा चेंजेस करना है, इतना कुछ करना है. सिंपली ट्राई टू डिवाइड दैट इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स. देखो कि इसको और कितने कितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं. स्टार्ट वर्किंग ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, एंड फाइनली यू विल सी दैट कि कंप्लीट टास्क कंप्लीट हो चुका होगा. लाइक कंप्लीट टास्क विल बी कंप्लीटेड, बिगर टास्क, राइट. तो आई थिंक इसी तरीके से कंपनीज में भी यार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज हो रहे होते हैं. मतलब तुम्हें यार जैसे तुम कोई डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तुम बहुत तरीके से सोचते हो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, क्या अप्रोच यूज करना है, क्या इसका कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं. यू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. हियर एज वेल इन अ कंपनी व्हेन यू गेट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू हैव टू थिंक मल्टीपल थिंग्स कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, कैसे उसे सॉल्व करना है, क्या हम लोग इसे कोई शॉर्ट टर्म फिक्स निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या इससे कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं, अगर लेटेंसी इंक्रीज हो रहा है तो क्या हम लोग लेटेंसी रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, राइट. तो मल्टीपल थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू. तो यार अगर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ही तगड़ा होगा तो यू विल बी एबल टू थिंक दिस थिंग्स. अदरवाइज नहीं रहेगा सही तो तुम नहीं सोच पाओगे. बट अगेन इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. तो या I guess we are done with the session. Mostly the things are already covered, and I just the main thing was to help you to understand how to improve problem solving skills. और मोस्टली तुम लोगों को समझ आ गया होगा इस सेशन से. सो या इफ यू स्टिल हैव सम डाउट्स तो तुम लोग यार मेरे संग कनेक्ट कर सकते हो, आइदर इन लिंक्डइन और इन यूट्यूब और टेलीग्राम, कहीं भी तुम्हें कनेक्ट करना है, यू कैन कनेक्ट विथ मी. और डायरेक्टली कुछ भी इशू तो तुम लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, वी कैन डिस्कस दैट एज वेल. ठीक है. सो या I think this was the complete thing I wanted to discuss in today's session. Yogesh, you can stop sharing your screen. Uh, Yeah, sure. okay, and I must say, Yogesh, your whole PPT was quite engaging. It is quite knowledgeable. Like, I hope this PPT will help a lot of students, and when they are facing these issues or challenges. So I must say, it will help a lot in this crucial Yeah. logic building skills. And we have a one question in the chat section from a user. He's asking for have a I have a problem in dynamic programming and graph problems. So can you suggest me some how to master this, or like how can I have a strong grip on these topics? Yeah, sure. So basically, if you're solving, like if you want to improve the concept like DP and the trees, तो मोस्टली तुम लोग देख सकते हो कि जैसे स्टार्टिंग के फेज होते हैं, एरे, स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, तो ज्यादातर वो इजी कॉन्सेप्ट होते हैं और सबको इजीली सॉल्व कर पाते हैं. बट व्हेन यू आर कमिंग टू ट्रीज एंड डीपी, तो दे दोज आर लिटिल बिट ट्रिकी कॉन्सेप्ट. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दोज आर ट्रिकी कॉन्सेप्ट. तो मोस्टली ट्रीज एंड डीपीज में क्या होता है कि उसमें रिकर्जन यूज हो रहा होता है, एंड व्हेन वी आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन, तो उसमें तुम्हें विजुअलाइज करना होता है ईच एंड एवरीथिंग. दैट इज इफ यू आर सॉल्विंग अ ट्री प्रॉब्लम, तो देन अगेन यू हैव टू विजुअलाइज अ रिकर्सिव ट्री. इन डीपी एज वेल वी यूज मेमोराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, तो वहां भी हमें रिकर्सिव ट्री को विजुअलाइज करना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कि तुम रिकर्सिव ट्री को कैसे विजुअलाइज कर सकते हो. हाउ यू कैन विजुअलाइज दैट? फर्स्ट सॉल्व सम रिकर्जन प्रॉब्लम्स. ठीक है. फर्स्ट गो थ्रू द रिकर्जन टॉपिक्स एंड सॉल्व बाइनरी ट्री प्रॉब्लम्स. मैं कोर ट्री के प्रॉब्लम्स में नहीं जा रहा हूँ, बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम्स स्टार्ट करो सॉल्व करना, एंड डोंट थिंक यार उसे सॉल्व करना है. फॉर एवरी प्रॉब्लम फर्स्ट ड्रॉ अ रिकर्सिव ट्री और उसको विजुअलाइज करो. इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज दैट, I think after that the tree problems and DP problems will become very easier for you. Major thing is recursive tree which you have to understand. So yeah, That's I guess good. that will help you. Hope we can have you have got your answer. And another question is from one person, Avinash. So he's asking कि भैया मैं थर्ड ईयर में हूँ एंड मुझे कौन से प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए. ओके. तो यार इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. अब ऐसा कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें यार सिर्फ क्लोन ऑफ अ व्हाट्सएप, क्लोन ऑफ अ ट्विटर, वही सब बनाना। इट्स नॉट ट्रू। फर्स्ट एक्सप्लोर। अगर मतलब तुम मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। यू कैन एक्सप्लोर वेब डेवलपमेंट, यू कैन एक्सप्लोर ऐप डेवलपमेंट, यू कैन एक्सप्लोर मशीन लर्निंग। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि यार तुम ऐप डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ। अब हो सकता है कि तुम्हें ऐप डेवलपमेंट नहीं अच्छा लगता, तो तुम मैं बोला तो तुम बना लोगे। इट्स नॉट द गुड थिंग। एक्सप्लोर डिफरेंट टेक स्टैक्स, एक्सप्लोर ऑल द अप्रोचेस, और देखो कि तुम्हें किस में बेनिफिट लग रहा है। अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट अच्छा लगता है तो फर्स्ट लर्न वेब डेवलपमेंट, और तुम उसमें कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि तुम्हें यार XYZ ही बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट एक्सप्लोर कि तुम्हें कौन सा पाथ अच्छा लग रहा है, राइट? तो उसको एक्सप्लोर करो, ऑटोमेटिक यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर कि तुम्हें क्या बनाना चाहिए। Exactly. Yeah. I just and I must thank you, Yogesh, for mentioning this point. We explore the topics and domains because most of the students they just limit to themselves in either in web development or in many minority will be in machine learning, such kind of domains. But they skip this explore wala part. They don't have that much time. They still are in third year. They have 2 years, but still they think that they're not having that sufficient time. So, guys, those who are thinking the same, you are committing a very big mistake. So, explore as much as you can. Maybe you have some scopes in Internet of Things and blockchain, some Android development. There are lots of domains available in this computer science. Computer science is not about solving the essay and doing the development. There are lots of things to do. Okay, so that's great. I guess we are done for the today's session. We have a limited time frame and we have completed that earlier. Okay, so once again, thank you, Yogesh, for joining us. And thank you guys too for joining this webinar. And I must say, Yogesh, the initiative that you have taken behind starting this weekend with us to provide that alumni connection, that senior connection to the students, and we can provide at least a platform where they can aware about this technology, the frame that we are talking about. So yeah, if these things are becoming possible, then all the credit goes to you guys because we have done at least 30 around 30 plus sessions, and all we have done, and it is possible just because of you. So yeah, on the behalf of the engineer hub and all the engineers, we are really thankful to you. So yeah, thank you. And one more thing, I think it's a very good thing which you all are doing. Like, without your platform, I don't think the other engineers not able to have shared their experience with the audience as well. So I think you are also doing a very great job to bring the people from different companies and explore the things which they have the knowledge with your audience. So I think, yeah, keep up the good work. Thank you. It means a lot, and it acts as a catalyst for us. It boosts our inspiration. So yeah. Okay, so thank you guys. Thank you for joining us and see you on the Tuesday where we will be exploring some advanced techniques on React. So yeah, stay tuned. Bye bye. Bye, guys.